हेलो वेलकम बैक टू युवा कबड्डी सीरीज 2022, जहां जोश, जज्बा और जुनून की कहानी लिखी जा रही है। जी हां, संस्कार और स्टेडियम में इस वक्त लगातार मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। डे नंबर 9 करेंगे मैच नंबर 44, जो वाला है मुकाबला टडोबा टाइगर्स वर्सेस पंचाला प्राइड के बारे में। और आज देखने को मिलने वाला होगा कि कौन सी कहां स्टैंड करती है और अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर कर पाती है। पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, टडोबा टाइगर्स वक्त 4th पोजीशन पर है, 7 से 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। और पंचाला प्राइड की बात करें तो 7 में से 2 मैच हार, 2 मैच में जीत का सामना करना पड़ा है, वहीं 4 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है। 9th पोजीशन पर है। आज किसी भी हाथ पंचाला प्राइड को अपना प्राइड बचाने के लिए जीतना ही होगा ये मुकाबला। वहीं डे 9 के मिक्स मैच फिक्चर्स की बात की जाए तो सबसे पहला मुकाबला आज 20 पॉइंट्स के साथ में जीती है AR पैंथर्स, वहीं 42 पॉइंट्स के साथ हीरोज ने यह मुकाबला अपने नाम किया। और शाम 4 बजे मुकाबला हमें देखने को मिला काजीरंगा राइनोस मराठा मावल्स, 2 दिग्गजों के बीच ये मैच मुकाबला हमें देखने को मिला। दोनों के बीच में टाई हुआ। और अब देखेंगे टडोबा टाइगर्स वर्सेस पंचाला प्राइड। रात 8 बजे सुपर संडे में आपको मुकाबला देखने को मिलेगा विजयनगर ईस्ट वर्सेस अरावली एरोज के बीच। जी हां, शंखनाद फूंकने आ चुका है बुलाने का हमारी टीम जो सबसे फेवरेट बनी हुई है, 4th स्टैंड पर है अभी इस वक्त में टडोबा टाइगर्स। टडोबा के टाइगर्स को चुनौती देने के लिए और उनके खेमे में जाकर रास्त करने के लिए हमारी पहुंच चुकी टीम पंचाला प्राइड। और अब हम मैच के ऑफिशियल्स का भी स्वागत करते हैं जो खिलाड़ियों की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। Good evening, everybody, and this Sunday evening is going to be a cracker of a game. This is the all-important game for the Panchala Pride and Toba Tigers coming in and making sure that toss is being won by Manish from Panchala Pride. Because this is going to be a watering game. As I say this is going to be the penultimate game in the survival round, and both Toba Tigers and Panchala Pride trying to make a match out of this. And but more on this Panchala Pride because they will be trying to win this and seal that place. As we look at Taroba Tigers coming in with Ashish and Neetu looking out the corners, and Karambir the Raider along with Dipanshu to support it, and Aman Gulia and Mohit look at the covers as well. We have Rahul, Sachin Karyan, Ronak, Yogesh and Nitin to fill up the substitution line and to bring the Panchala Pride. It has been a big honor, and we kind of somewhere missing my very old friend Harshit. Good evening, brother. How are you? Come in. गुड इवनिंग नवीन, ऑल वेल। आप बताएं। और मेरे पंचाला प्राइड की स्टार्टिंग 7 की बात करते हैं, वहां पर जिस प्रकार से अच्छा कर रहे हैं अजय मोर कॉर्नर खेलते हुए नजर आएंगे, नीर मलिक मौजूद हैं और एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पर नजर आई। पर प्लेयर्स जो लोग और की अगर हम बात करें, सचिन रेडर, मोहित डिफेंडर और मनीष गुलिया की आपने बात की थी। और सुपर फिर से आज संडे बनेगा क्योंकि मेरे साथ कमेंट में अब नवीन मौजूद हैं। Yeah, exactly. Super Sunday. Why? Just because it's on, it's because of the mouth-watering game. It's more of to do with the mouth-watering game because Tigers, the Taroba Tigers, have qualified, and only 2 teams now left fighting for the 8th place, and it's going to be the Sonics or the Panchala Pride. Now that's a big question. Panchala Pride lose this match. Sonics, who played that match, was very, very important morning to be making sure that they go through. And if Panchala Pride wins, they will make sure that they go through. And what a setup! What a setup this is going to be. और देखिए इसी तरह की आप सेटअप यहाँ पर चाहते हैं और इससे पता लगता है कितना टफ कंपटीशन पर सभी टीम देते हुए नजर आई है। वो क्वालिटी ऑफ कबड्डी दे आर ब्रिंगिंग। युवा कबड्डी सीरीज क्या कबड्डी का यहाँ पर लेकर आई, क्या स्टैंडर्ड लेकर आई। और पंचाला प्राइड की यहाँ पर हमने बात मनीष गुलिया पर आज फिर से यहाँ पर
होगी और बहुत ही शानदार। हमारे स्पॉन्सर्स को एक बार हम फिर से धन्यवाद करना, हमारे पार्टनर्स और ब्रॉडकास्ट पार्टनर कोड पर आप इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। वेन्यू संस्कार स्कूल जयपुर, पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर UEM, हॉस्पिटल पार्टनर मेट्रो मास हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड वॉइस ऑफ द इवेंट FM का अपनी सुनो और अपनी सुनना पंचाला प्राइड। और नवीन में आपकी सुनूंगा, क्या कहेंगे आज आप इस मुकाबले के लिए? इस मुकाबले में ये बस ये कहना चाहूंगा कि एक आवाज जो 3-4 दिन से लापता थे, तो उनको हमने पुलिस पे रिपोर्ट किया था और आज वो वापस मिले हैं हमें। That is nice to see that police of Jaipur has done a good job in your ship. Where were you, brother? देखिए इसका आंसर मैं तो आपको थोड़ा धीरे मुकाबला आगे जाएगा वैसे दूंगा, पर चलिए बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया, जवाब जरूर आपको दिया जाएगा, बट कठिन प्रश्न चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, कब कठिन प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? Where were you missing in? देखिए बिल्कुल आपको जल्दी इसका आंसर टेक्स्ट अप करता हूँ अभी इनबॉक्स में। Oh, there we go. That is the politician for us as Karambir starts the proceedings. Taroba Tigers from the right to our screen and ensure that the Panchala Pride will get that first point. From the left corner, Ajay Moore says, okay, since if you're watching this match, watch more carefully because this is my first tackle point. और कॉर्नर पर अजय मोर, क्या बात है, मांगे मोर और पंजाला प्राइड ने जिस प्रकार की शुरुआत की इनकी आवश्यक थी वो शुरुआत मिली है। बहुत ही खूबसूरत टैकल और शुरुआती टैकल में कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चले जाए, परंतु क्या कॉन्फिडेंस मनीष गुलिया भी लेकर आए। कितने पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट तौर पर है? जी हाँ बिल्कुल, एक शुरुआत पंचाला प्राइड के लिए यहाँ पर हो चुकी है। नवीन, this is both the teams that trying to show the defensive and the powers, one on the left, one on the right, and Neetu gets it for them, but then Manish Gulia trying to go ahead with that. Star Raider for Panchala Pride done so very well in the end series, and now he's trying to put the impact back because he's 79 great points in just 7 matches. So that is really nice with 5 Super 10s in 7 matches. So he's all that to play for pride of the Panchala Pride, and not pride. They're also very, very close in sealing a position in the top 8 to go through towards the round. But on the other hand, Taroba Tigers will be happy in saying, okay, let us just see if Panchala Pride can lose this match, and also Sim will be supporting the Taroba Tigers. बिल्कुल बिल्कुल, और सिंधु सोनिक आज मुझे लगता है यहाँ पर ऑरेंज और व्हाइट जर्सी में होगा, सपोर्ट कर रहा होगा पर टडोबा टाइगर्स को कि चलिए ये मुकाबला टडोबा टाइगर्स जीते और सिंधु सोनिक। और टाई में भी नवीन में समीकरण जान यहाँ पर देखना होगा क्या सचिन यहाँ पर पॉइंट लेते हुए नजर आएंगे। हमने स्कूलिया की बात की, परंतु सचिन ने 87 पॉइंट्स लिए हैं महज 7 मुकाबलों में, 4 सुपर 10 7 मैचेस, और बहुत अद्भुत खिलाड़ी के जंप्स बहुत अच्छा है, रनिंग बहुत अच्छा है, और किसे शिकार बना देवेंद्र को, विपक्षी टीम के डिफेंडर को। Yeah, and that running hand touch put off off balance. They were not a small defender to take off because he had got 26 tackle points. Then Manish Gulia once again goes in and deflects the defender. How many points has he got? Question, 1 point there for him. So point coming in thick and fast, and then could not go back from the left end. There was a surprise ankle hold had come in, but could not surprise, because the one of surprises, Harshit, I guess you've been looking at Fanco and all the matches out, but Karambir has been nagged by on the right. That one match has been a very, very good surprise, and some sultan of surprise is what we are finding him is for that Periyar Panthers. He's been a revelation, putting in the surprise tackle from the right end and even the left positions, isn't it? बिल्कुल, और नीर मलिक को भी यहाँ पर देखा कि वहां पर एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट, अच्छे अंदाज में यहाँ पर फिर से मनीष लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। पंचाला प्राइड के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो, पंचाला प्राइड के सभी फैंस इस स्टेडियम में मौजूद हैं, घूम रहे हैं मैदान यहाँ पर बहुत अच्छा, और गलती एक बार फिर से लगातार गलतियां करता हुआ नजर आया है। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर, आपने बिल्कुल कहा वहां पर पंचाला प्राइड की जिस प्रकार शुरुआत चाहती थी, और अब रेड डिपार्टमेंट को संभालते हुए नजर अमन गुलिया कवर मोहित के साथ जब खेल रहे हैं, बहुत अच्छी दोनों की नजर आ रही है, पर अब रेडिंग में भी इन पर आ रही है। 7-2 की शुरुआती पंचाला प्राइड के पक्ष में।
Yeah, that is really, really important for the Panchala Pride ahead. Because, there you go, there you go. Big warning coming in for the Panchala Pride's captain. And Manish did not respond. Neer Malik says, okay, I'll fight. Ankle hold, super tackle situation. Oh, Manish Gulia kicks him away and says, no, 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 we are winning this match. That's what we want. They really need to get along, make sure they go in for that booster. Ankle hold was so strong there. बहुत अच्छा प्रयास वहां पर किया था, शायद अमूल्या वहां पर मौजूद है, अच्छी कोशिश की थी वहां पर, परंतु कोई सपोर्ट मिला नहीं, महज 2 खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छा प्रयास था, 8-2 शुरुआती जो बढ़त है अब सब किया गया है। नितिन यहाँ पर नजर आएंगे रेड करते हुए, लेफ्ट रेड के साथ शुरू करना चाहेंगे। देवेंद्र बिल्कुल यही बताते हुए कि रहिए, क्या यहाँ पर एक लेकर आए, क्या यहाँ पर किसे किया देखना चाहेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट दिलाया है। Yeah, Taro Tigers also not letting them go. Oh, look at that. What a way to get that turning toe touch. Another new skill coming into play. And that was beautifully done by Nitin, who had some. Now Manish Gulia will try to kick up, goes towards Nitin and then goes back. And the end line has been going up. Any which ways, Manish Gulia will put all the arguments to rest by going ahead towards the midline. And even before the attack was happening, we witnessed it very clearly. The end line was out by the defender. Look at that. That's the umpire saying from saying, right, you've come back, you've come back. That's the all out. First for Taroba Tigers, and Panchala are marching ahead. Sonics will not like this. For sure. और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी देर में वो मैदान पर आकर भी स्कोर करना चालू करेंगे, पर इस प्रकार प्रदर्शन वो करना चाहेंगे। सच कैसे रेडर हैं, पंचाला प्राइड आउट ऑफ द कोर्ट रखना चाहेगा और टाइगर्स और सिंध सोनिक का खेमा चाहेगा कि सचिन आपने बहुत काबिलियत है, डू एंड गिव योर giving the best like hard, and very for the Panchala Pride to maintain this. We have seen Panchala Pride go ahead and take that lead, but somewhere they lose out on options, lose out on some strategies, and try to make errors which is not required, as Saman stands there and runs the clock down. Yeah, very nicely done by him. Yeah, still time out, and trying to clear out some issues on the mat. Oh, look! Yes, they're all Sin Sonic supporters. No doubt about this. All youngsters, all kids, and I love the way they are sitting and watching this match, because this is the all-important match as physio partner UEM, University of Engineering and Management, takes care of the players. What I really love about that scene that we just saw of the youngsters is how they have been involved in the game of Kabaddi. They are just sitting there and praying one team, which is really nice, and I'm sure they're all playing in for the Sin Sonics and supporting the Taroba Tigers. For the situation and for the reason that they gave, with Panchala Pride this by 8 points, they all look nervous. But I'm a good try. बहुत अच्छा वहां पर था, होल्ड पर गए थे वहां पर, क्या वहां पर मिडल से आए थे और देखिए कितना खुश हुए। देखिए वो कबड्डी के गेम को सपोर्ट, मुझे लग रहा है वो कबड्डी के गेम को सपोर्ट कर। ये देखिए बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर आए थे शायद, और बहुत अच्छा वहां पर दीपांशु सावन और यादव का वहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और सब्स्टिट्यूट हुआ है, बट नवीन आपने बिल्कुल कहा। और ये भारत का आने वाला, और क्या पता इनमें से कोई प्रदीप बन जाए, क्या पता कोई राहुल चौधरी बन जाए, और क्या पता कोई कबड्डी का सबसे बड़े लीजेंड में से एक अनूप और अजय ठाकुर बन जाए। अरे 100% उन सब नामों के साथ क्यों ना प्रतीक दहिया के बारे में बात करें, मलिक के बारे में बात करें, क्यों ना हम मनीष गुलिया के बारे में बात करें। And that is what it is, no? Because see, everybody has given their best. No credit taking away from Mr. Ajay Thakur, and also great man, the legendary Rakesh Kumar, Anup Kumar. Everybody has given their best. Just all that. But now once again, Karambir has to go back for that double hold, which was so strongly up there by Neer Malik. Surprise ankle hold from the input. But we're talking about youth Kabaddi series, and we've had big stars in our series as well, as Mahipal and Jai Bhagwan, and Rinku, in fact, even the biggest name is Narwal. And on a 2 grade, that is so easily done. 2 और पॉइंट यानी कि पंचाला प्राइड ने शुरू
ने जिस प्रकार से चाहिए थी और आपने बिल्कुल सही। युवा कबड्डी सीरीज में कुछ बहुत बड़े नाम यहाँ पर आपको नजर आए, चाहे वो जय बच्चन का हो, जिस प्रकार से हम बात करें, गोविंद गुर्जर की बात करें, कपिल गुर्जर की बात करें, और ये सारे ऐसे ऐसे डिफेंडर्स, ऐसे ऐसे ऑल यहाँ पर हमें नजर आए जो इस बार वहाँ पर क्या टो टच प्राप्त किया। नंबर 4 इंप्रेस करते हुए नितिन, पहले जब महज 2 खिलाड़ी थे, जब अपने कप्तान रिवाइवल दिलाए तो और एक बार फिर से बहुत ही अच्छे अंदाज से किक लगाया, कॉर्नर को शिकार बनाया। और क्या वहां पर देवेंद्र को शिकार बनाया है, ये कंफर्म करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देवेंद्र को शिकार बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर ऑफ पंचाला प्राइड, लगातार शिकार बनाते हुए। Devendra today is strong because some the Tadoba Tigers really taking him on, saying, okay, this is how we'll have to make sure that we get the pointers from Devendra. और देखिए आज तड़ोबा टाइगर्स का मैच उस प्रकार से देखने को मिला नहीं है, अधिकतर वहां पर बाहर रहे, आउट ऑफ द कोर्ट। अमन गुलिया की हम बात करते हैं, हम की बात करें, आशीष और नीतू अपने असल रंग नजर नहीं आए, तो डिफेंडर्स को बहुत ज्यादा पॉइंट मिले नहीं है। रेडर्स ने प्रयास किया, सचिन से अंदर गए और शायद देखना हो कितना अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए। नितिन को 2 पॉइंट मिले, सचिन ने प्रयास किया, सिर्फ 5 पॉइंट। शुरुआती लगभग 9.5 मिनट का खेल हो चुका है, पॉइंट से यहाँ पर ओ ये क्या, ये सुपर रेड हो सकता था पर नहीं, और क्या यहाँ पर पंचाला प्राइड की जोड़ी ने दीपांशु और रोहित यादव की, सचिन हो या फिर वे हम आसानी से जाने नहीं दिया जाएंगे। और वहां पर सपोर्ट बहुत, नीर मलिक ने वहां पर आकर को यहाँ पर इंश्योर किया कि आप बाहर ना जा पाए। Very, very good combination tackle. That is what you want to see as a team which is hunger to win, hunger to go ahead in this survival round and to go towards push around. Look at Manish Gulia once again nullifying the effect of the defender from the right flank. And the support was what expecting, which was not there around when Manish Gulia is reading so well. इसी की हम बात कर रहे थे कि डिफेंडर्स लगातार ट्राई भी करते हुए नजर आए वो, और सबसे अच्छी पंचाला प्राइड की नवीन मुझे ये लगी कि देखिए मोमेंटम को बनाने के लिए खेल, ऐसा नहीं कि कभी भी मैच को, और इस तरह से आप कहते भी है ना कि आप पहला हमेशा इसी प्रकार से खेलिए, आप कभी भी नहीं होना नहीं चाहते, चाहे आपके पास कितनी बड़ी लीड हो। सेकंड हाफ के सेकंड हाफ में जाइए अगर आपको कूल डाउन होने जाना है, वो इस बार शायद वहां पर कूल डाउन नहीं होने जाएगा। नितिन लगातार पॉइंट ले रहे हैं, इस बार शिकार बनाया वहां पर नीर मलिक, अच्छा लग रहा है और बोनस भी लेकर इस प्रकार के युवा खिलाड़ी फॉर्म करेंगे तो आने वाले मुकाबलों में अच्छा, आने वाले राउंड में टडोबा के पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस जाएगा और एक सब्स्टिट्यूट रेडर के तौर पर नितिन हो सकता है। जरूर हो सकता है, लेकिन felt somewhere the defense faltered because Nir Malik was going in for that ankle hold, which was not there. Then can this be a second? Yes, the opportunity has been seized by the Tadoba Tigers at the end minute and the last moment of the raid. Nitin Singh felt that okay, even I will go and try and do something on this. There you go, look at this for a super. Oh, that was so close. Once again, it was Nitin from Tadoba Tigers making sure he contributes to the tackle as Karambir walks in. और आशीष का ओवर बहुत होल्ड था, बहुत अच्छा डबल था होल्ड पर, इस जोड़ बहुत अच्छा था और लगातार अब गलतियां, ज्यादा समय लगता नहीं 12 पॉइंट की लीड को कम करने में, 11 की लीड करने को कम, क्योंकि टडोबा टाइगर्स के पास वो अनुभव है। इस प्रकार से मुकाबले में वो वापस आते हैं और करमवीर ये अपने के अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। ये वीर है और मैं इनके नाम में ही आता है तो निश्चित तौर पर करमवीर, क्या लाजवाब प्रदर्शन गुलिया। और देखिए 8 पॉइंट की लीड रह गई है पंचाला प्राइड, ये एक समय बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। Yes, these lines that we were missing is what I was trying to say. Karambir, Karam and split across, right? That is what we were missing. But still, we've had fun keeping you and then we were also talking about you to my fellow commentators, especially Ryan, Neet, and all of them. I was actually talking about you. How very nicely you balance both of them. Like आप सांप को भी नहीं मारते और लकड़ी भी टूटने नहीं देते. So nicely you make sure that the politically right statements come from you, isn't it? We were all missing that. देखिए नवीन, मैं सच बताऊं ना तो मैं से पहले वहां पर इतना अच्छा नहीं था इन सब चीज, पर जब से आपके साथ कमेंट्री करने लगा और इवन बेटर होते चले जा रहा हूँ। आपकी तरफ कुछ इशारा नहीं कर रहा हूँ नवीन, आप समझ रहे हैं मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। This is what I said. आपको भी नहीं मारते और लकड़ी भी टूटने तो, लेकिन यहाँ पे मनीष ने दिखा दिया कि ये सांप रहेगा या लकड़ी, तो एक तो रहेगा और मनीष गुलिया पॉइंट पे पॉइंट बटोरते हुए
पंचाला प्राइड के लिए। और इसकी आवश्यकता नहीं थी। करमवीर अभी रेटिंग में पॉइंट लेकर आए थे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ब्लॉक लाइन से आगे आप मनीष गुलिया प्रकार से डिफेंस करें और सोनिक ने जरूर थोड़ा सा खुश होता हुआ नजर आया क्योंकि जानती है टड़ोबा स्कॉट टाइगर्स इनके नाम में आता है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और नितिन बहुत इंप्रेसिव नजर आए, बहुत इंप्रेसिव आए। फुटवर्क अच्छा पर अजय मोर करेगी पंचाला प्राइड निश्चित तौर पर इस बार फिर से लाजवाब डिफेंस। अजय मोर जिन्होंने पॉइंट दिलाया था पंचाला प्राइड को अपने डिफेंस में, अब इंश्योर किया है इन्होंने कि जब जब टीम को आवश्यकता होगी तब मैं मोर पॉइंट्स लेकर दूंगा। Yeah, there we go. And Ajay Moore was actually somewhere slipping away that tackle, but then he was lucky to get out Sachin's ankle in the time. But Manish Gulia now will not try it too much because he knows that it's a 10-point lead. And for the Panchala Pride, it is just that match winning that is more important than goal difference. And very eagerly watched match. This one, the penultimate match of the survival series, because after this round, go to the booster round in this Yuva Cup Series summer edition, which is very, very important for all the top teams to go through, because it is going to be 56 match round for a double round robin, a bigger round than survival round. And there you have too many to plan out, too many strategies to plan out, and think about opposition, how to topple them ahead of them. As once again, there is a bonus point that was stolen in from the top raider. And also the captain Mohit just taking up that responsibility of raiding sometimes becomes really for the Taroba Tigers. और 9 पॉइंट की लीड है, बिल्कुल सही आपने नवीन। और छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे एक और ही रहेगा ना कि देखिए आज यहाँ पर ये अंतिम दिन है, जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड की हम बात, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट पंचाला प्राइड और सिंध सोने के लिए। कप्तान एक बार फिर से रेड करते हुए नजर आए। नवीन, अगले जो 2 दिन वहां पर हॉलीडेज है, आपके क्या प्लान है? में क्या आप मूवी जाने वाले या फिर क्या आपकी प्लानिंग्स है? किस आप big releases lined up there, Harshit. I'm really getting in for this because once again the captain takes another bonus. And do what I read. I'll talk about my planning for the 2-day break, but then Julia has got some other planning going towards his team. In a raid, he makes it look so easily, and once again having that touch and making sure the ankle was up there in the clasps of the defender to go back. That's very well done. Yeah, see, more than me, what I really love about is the entire of Yuva Kabaddi series going in for that 2-day break. Much higher 2-day break, because 9 days of continuous Kabaddi, 9 days of enthralling and engaging content that's been put on air, on fan code. Everybody, right from the referees to the scorers, the cameramen, the event operators, the director, and also I should this name, which has been very, very helpful for all the team sheet that is coming, very beautifully handwritten by one Mr. Ram. So he's also there for him. So for that 2-day break, it is everybody who receives that, and then it's a solo tackle. It is a solo tackle. Then the end line was being told by Mohit that okay, you come out, and then the another defender with a solo tackle putting that super tackle. What a way there, Harshit. Check that out. क्या खूबसूरत था। देखिए ये फोर्स का पता लगता है यूपी सीरीज में, बहुत अच्छा फोर्स का यहाँ पर उपयोग। और मनीष गुलिया की भी वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने पता है कि 2 पॉइंट विपक्षी टीम को यहाँ पर मिल चुके हैं, तो मेरा क्या कार्य यहाँ पर? मेरा कार्य है कि चलिए 1 पॉइंट हम लेकर आऊं तो एक अच्छा विकल्प रहेगा। 2 पॉइंट्स की हमने सुपर टैकल का पर जरूर मिला, और अब एक और बार यहाँ पर ऑल आउट की तरफ धकेल दिया है। गलती, ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर। ये आप इतना लाइन के आगे जाके इस प्रकार से चढ़ो, आशीष आपने इससे पहले एक टैकल जरूर किया था, बट ये यहाँ पर गलती करते हुए नजर आए। Yeah, absolutely. So that solo tackle by Ashish somewhere giving that extra confidence. This became a little more extra to become overconfidence there. But get the bonus though this time. Taroba is on the verge of an all-out. Another time, and this will not be they will be wanting, as Sachin will try and get us touch point from. He's given the bonus away. Then turn, tumble. Yeah, super 8. Turn, Bonus, yes. Yes. I think bonus +2 there, Harshit. जी हाँ, बिल्कुल वहां पर 2 खिलाड़ियों को शिकार बनाया है।
यानी कि लीजिए आप लगातार दूसरी से तीसरी बार मैं देखता हूं नवीन की जब जब टडोबा टाइगर्स ऑल आउट के इतना करीब होती है तब टडोबा टाइगर्स अपने रेड डिफेंडर से कह देती है कि चलिए इतनी आसानी से हम दूसरी दफा ऑल आउट होंगे। 23-19 महज 4 पॉइंट का फर्क रहा है। नवीन एक बार 15 पॉइंट की लीड नजर आई थी, कम से कम ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड बना सकती है पंचाला प्राइड। सिंध को भी थोड़ी सी एक सामने का मौका दिया टडोबा टाइगर्स ने। Absolutely, absolutely. This is what I was trying to say. The Pride begin the game very. उनकी शुरुआत अच्छी है। मतलब जो हम कहते हैं ना जी विनिंग टाइटल्स, एक फिल्म में विनिंग टाइटल्स आता है तो हीरो की एंट्री धुआंधार होती है। That is really nice as पंचाला प्राइड। लेकिन भी चलते जाते 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 उनका कहानी ऐसे बन जाता है कि तक मतलब क्लाइमैक्स तक तो कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। तो that is what not be trying to do in this game. Very important. Once again, can the Diamond take it off? No guess. Oh, the reaction says it all. क्या सिर्फ लीड एक Let's- पॉइंट के होते हुए हैं आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ एक पॉइंट की लीड नजर आती है अब? I will listen to Anji because she's my principal, and I will always listen to her. Look at that. Oh, 1, 2, 3, 4, sure, but let me see what happens. Sachin himself is counting. 2 points. Oh, only 2 points. That look like 2. But if the referee is saying that, of course, yeah, going to be only 2. But once again, Kolkata Tigers have come back into this and just a 2-point lead. Manish Gulia will be saying, अरे अब तो यहाँ पे 2, 3 थे, अब ये उल्टा कैसे हो गया? और मनीष गुलिया एक बार से इन पर जिम्मेदारी और पंचाला प्राइड के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस ने लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। चाहे हम से बात करें एक बार क्या फिर से स्कॉर्पियन के वहां पर लगाने की कोशिश की राइट की दिशा में और 21-23 यहाँ पर 9 पॉइंट जगवीर को मिले टडोबा टाइगर्स से। पंचाला प्राइड से अगर मैं बात करूं तो मनीष को मिले। और फर्स्ट हाफ जिस आपने कहा था कि शुरुआत बहुत अच्छी कर पंचाला प्राइड पर थोड़ा थोड़ा आते आते की कहानी ऐसी हो जाती, बट कबड्डी के फैन के लिए हमने सेकेंड हाफ में फुल और क्लाइमेक्स का बहुत सारा एंटरटेनिंग मुकाबला भी बाकी है। मैजिक सेकेंड हाफ का इंतजार है नवीन। पहले हाफ की एक बार थोड़ी सी हाईलाइट की बात कर लेते हैं। Absolutely. नहीं चला कब 20 मिनट का जी, but that's how it is. It's such a fast game when there is competition from fans. This is what we get to see a lot of times as Sumanji started the proceedings for the Taroba Tigers because they lost the toss and they had to come into raid. So that is what the story is about. Fantastic beginning by the Panchala Pride as always. Their rating is not let them down. But what has happened once again from the Taroba Tigers, the Raiders have come back and scored really well. Sachin Jakir, can you believe it? 9 points already for him. And for the Panchala Pride, it is really nice to see. For Manish Gulia is also on points, can get this sorted. As Sim Sonics, yes, they will be supporting in the Tigers. और इस भी यहाँ पर हमने देखा कि सुपर कई बार नजर करते हुए आए, परंतु मनीष गुलिया आज एक ऐतिहासिक प्रदर्शन की तरफ भी जानते हैं। ये उनके लिए गेम है, ये उनके सो कॉल्ड फाइनल, सो कॉल्ड सेमीफाइनल कह लीजिए या फिर कहना है कह लीजिए डू और मुकाबला है। अगर यहाँ पर जीतेंगे तो आगे की तरफ प्लान करेंगे आने वाले समय कबड्डी सीरीज के साथ बिताना चाहते हैं। और ये वो रेड था दिखाई जानते थे वहां पर टांग बीच में से इजीली वहां पर लाइन के क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने दास से यहाँ पर हैंड निकाला। और टडोबा टाइगर्स ध्यान दीजिएगा, रेड पॉइंट्स अभी भी इनके पास आ गए क्योंकि मनीष के अलावा कोई रेड पॉइंट से लेकर नहीं आ पाए। नीर मलिक को हमने ज्यादा देखा नहीं है। टैकल पॉइंट जरूर पंचाला के पास आ गए, 2 और ऑल आउट करने का मौका था परंतु कर नहीं पाए। अतिरिक्त पॉइंट्स भी हैं 2। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवीन और मैं कमेडियन हर्षित शर्मा इस ब्रेक के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्द।
Welcome back, everybody, on Fanco. Nagachari along with me is Harshit, and we are witnessing one of the best matches of the day here. And this is going to be the virtual quarterfinal. Where I say virtual because what happens if Panchala Pride wins this is because they go and Sonics probably will be making sure that they'll be coming through to the booster round. But if Panchala Pride win, they go through to the booster round. So this is a match which will decide the fate of teams. One playing on the mat, watching this on Fancode live along with Navin Shauri's commentary and Harshit Sharma's commentary. But in this Sanskar School of Jaipur, we have witnessed a fabulous 9 days of Kabaddi series of the first round, that is the survival round of this competition. And after 2 days, we will be going in for that booster round. Harshit, you were asking me about what to do for those 2 days. Yeah, more than me. I was just saying that it's a very good break for everybody on the arena who spent 9 days to put out fantastic content. But talking about my, someone had actually gone in for a 3-day break. We will also see where they had gone, and we will try to put that information also out. देखिए नवीन, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुछ अजय की वजह से मुझे थोड़ा सा पंजाब की तरफ जाना और उसकी खूबसूरती यहाँ पर देखिए। भारत एक इतना लाजवाब देश है, वो प्राकृतिक जिस अंदाज में हम भारत को बात वन ऑफ द ग्लोब हम बात करें तो सबसे खूबसूरत देश आता है, जिस प्रकार से खूबसूरत यहाँ पर तकबीर की जहाँ से अच्छा भाई यस, और प्राकृतिक बहुत ही अच्छा है वहाँ पर पंजाब में जाकर थोड़ा समय व्यतीत करने का मौका मिला कुछ फैमिली के चलते। परंतु वहाँ पर देखा उनमें भी उनकी युवा में जिस तरह से कबड्डी को लेकर भी इस बार सचिन जगबीर को क्या शिकार बनाएंगे। पंचाला अपना पहला सुपर टैकल यहाँ पर प्राप्त नजर आएगी। स्ट्रगल ऑन जरूर पहले तक, परंतु यहाँ पर एक सुपर टैकल और सर्वाइवल राउंड क्या सर्वाइव कर पाएगा पंचाला, ये देखना होगा। Yes, once again, Ajay or there, making sure the ankle were not being left alone. Then the support came in very strongly by Julia. Sachin Jagbir struggle, trying to go back, but no, the super tackle was inflicted. Yeah, just talking about Punjab, yes, wonderful place, and I've been there so many times. I love the way the lassi is being prepared there. I love the way the food of Punjab is, and that gives so much of josh and junoon for all the youngsters there. Especially that big glass of lassi that we get to drink, as Manish Gulia, I think, has drunk a lot of lassi today, because I know it is a bit of heat also getting in Jaipur. But now the time going in to the evening time, sure the heat is only on the kabaddi matter. और नवीन हेवन टू लस्सी मैंने वहां से पार्सल कराई, मैंने बोला था कि स्पेशली नवीन को वहां पर दी, बट मुझे लगा पहुंचे नहीं पूरा गिलास से, लगता है आप नहीं एक हमारे चहीते दोस्त हैं, नाम अश्विन है, उन्होंने मतलब घटक लिया था. So what happened? I never get to even वाया जयपुर भेज दिया. Actually. Then coming back to this match, I'm sure the Simpsonics will not be sitting with a glass of lassi. They surely will be hoping that the Rock Tigers will give them some sort of energy to go to the round. But Panchala Pride, they are playing this like champions, and they are making sure that Rock Tigers have not got a lead even a single time in this game. Harshit, they're in front every single time. How many is Manish Gulia got? Oh, all of these cleanly swept. Taroba Tigers defense. That's an all-out for sure, but that's also super duper great from Manish Gulia. Look at that. All three men hand touch, and then the dash is not coming to good effect. Has to be back. Oh, Nitin, Rambir, and also another defense. Can you believe this? Punjab Pride are now with 10 points ahead, and it's going to be tough for the Sins. और कंसोलिडेट करना चाहेंगे अब बनाकर रखनी होगी यहाँ से लीड, और एक बार फिर से गए कप्तान ने लगातार बोनस, और जिस तरह से आपने क्या खूब बतलाया वहां पर स्वेप्ट अवे, जिस प्रकार से सूर्य के उगने अंधियारा वहां पर पूरी तरह से खत्म जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर मनीष गुप्ता एक बार फिर से स्वेप्ट अवे कर दिया था को। एक अच्छा पॉइंट नीर मलिक, यही मैं चाहता हूँ, नीर मलिक भी एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे राउंडर है, हालांकि डिफेंस में भी बहुत कार्य कर रहे हैं। राइट कॉर्नर को कार बनाए नीतू को, जो आज टोटल आउट ऑफ कलर नजर आए। Yeah, totally out of. But I like how Jagbir goes in. He's going in bonus, and that confident jump that
that he's got it. Yeah, he's got it more than one occasion, no problem. But also, more than getting it, it was Ajay Moore actually saying, okay, you take bonus and go away. We are not giving you any time. That is what is being told. और देखिए सिर्फ वहां पर पहले के बाद एक पॉइंट अभी तक टडोबा टाइगर्स को मिला है और कितने सारे पॉइंट 9 पॉइंट यहाँ पर पंचाला प्राइड को मिले, क्या 10वां भी मिलेगा? क्या दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पर लगातार शिकार बनाने का प्रयास है? शीश नुतू दोनों कॉर्नर आउट ऑफ द कोर्ट यहाँ पर आएंगे बेंच पर. I guess back kick coming into good, but that's only one, I guess. But then I'm completely in awe with how Sachin Jagbir has raided, because he definitely was not so quick and so agile when the tournament began, but will give them very big confidence going in to the booster round. So because what happens if Taroba Tigers are going in with such good raider is they will also make sure the other teams are Taroba Tigers in a different angle. फॉर श्योर, बिल्कुल नहीं सही कहा. और अपना सुपर 10 भी पूरा कर चुके हैं. एक और अपना बड़ा सुपर 10 यहाँ पर किया है. और वहीं पर हम मनीष गुलिया की बात तो ये भी क्या एफर्टलेस रेडर है. कितनी ताकतवर और साथ वो चपलता, वो स्फूर्ति, बिजली की तेजी इनमें नजर आती है. इनके देखिए ऐसे वहां पर लगातार ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रहते हैं. दिमाग का इस्तेमाल और ब्रेन का इस्तेमाल कहते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडर बन जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं. और ये भी खिलाड़ी हो या फिर मनीष गुलिया, दोनों इसके साथ साथ अपने दिमाग का, अपनी स्फूर्ति बहुत अच्छा उपयोग करते हैं. देखिए बहुत फास्ट है सचिन. पॉइंट एक और टच पॉइंट. Absolutely, and also being fast, he's also very undecisive. That he himself should understand what he's trying to do, because the defense can't judge him, because he's got such quick footwork. You will not expect him to run towards the right with so much indecisiveness. So that puts the defense also in another spot of ball, because they cannot guess and guess when will Sachin come charging towards you. बिल्कुल आपने बहुत ही बारीकी इस बात को बताया है नवीन, बहुत ही बारीकी पर आपने बताया है कि उनके अलावा शायद नहीं जानता कि वहां पर कब वो किस अटैक कर दें. और मनीष बिल्कुल उसके विपरीत रेडर है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. वो ये चाहते हैं, श्योर करते हैं कि डिफेंडर गलतियां अगर थोड़ी सी भी करे तो मैं आसानी से पॉइंट लेकर प्राप्त कर पाऊं. सचिन फिर से बहुत ज्यादा अंदर जा रहे हैं, जानते हैं वो जंप्स के लिए जाने जाते हैं. सचिन इस बार जंप को इंश्योर करेंगे. कॉम्बिनेशन पांचों के पांचों ने यहाँ पर मिलकर इस बार कॉम्बिनेशन निकल गया और पंचाला प्राइड के लिए अच्छी है. सचिन जितनी देर आउट ऑफ कोर्ट ये उतना बेहतर है. Yeah, I'll tell you what happened. It's a very big strategy that the defense had applied. If you see the right flank, Harshit, when Sachin was raiding, nobody was in the chain. Everybody was without the chain. Even just 5 men on court, everybody was just standing alone. And because the indecisiveness that I was talking about. Sachin, when you cannot expect to gauge when he's going to come charging at you. So that's the reason there was no chain. There is no chain. What happens when one defender pounces on Sachin and everybody can come and support? That's what happened. And now see, when Karambir is raiding, the chain is there. That 3 chain which is there. And Karambir says, no, I haven't touched it. Yeah. He immediately agreed. And that's very, very good spirit. And a do-or-die for Manish Gulia. एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन आपने नवीन बहुत अच्छी तरह से बताया. और अब देखना होगा मनीष गुलिया टच पॉइंट का प्रयास. इनके पास इनके पास ताकत है, इनके पास कलात्मक प्रदर्शन है. एक बार यहाँ पर शिकार बनाएंगे और क्या नित्य शिकार बनाए. क्या इसकी आवश्यकता थी? 4 नंबर जर्सी नित्य को वहां पर मौका मिल रहा है शायद लेफ्ट कॉर्नर खेलने का, राइट कॉर्नर खेलने का, परंतु पर वहां पर इस प्रकार लूज टैकल नहीं कर सकते. और खासकर जब डू और डाई रेडो आपके मौका था विपक्षी टीम के सबसे बेहतर रेडर को ऑफ कोर्ट करने का. कहने भी वाला था नवीन कि सचिन को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला नहीं है. करमबीर गए, अच्छी बात है, और लेकर आ रहे हैं. अब हमें सपोर्ट मिलना चालू हुआ है, जिस प्रकार से मनीष गुलिया को भी रेडर बहुत ज्यादा सपोर्ट बाकी रेडर से मिला नहीं, क्योंकि आज तरफा यहाँ पर नजर आए. और अब सचिन जगबीर को यहाँ पर सपोर्ट मिलना चालू हुआ है. करमबीर एक अच्छा पॉइंट, इस बार भी एडवांस टैकल करने की कोशिश, बहुत जल्दी टैकल करने का प्रयास पंचाला प्राइड के डिफेंडर्स द्वारा. Yeah, that advanced tackle, even then, what is you're trying to save that on a defender. I feel if once the raider is outside
your arena or outside your angle, the cover defenders should not go for the dash. Even if you're not able to support your defender, of course, see, I understand it's a body language, it's a mind memory, and it's also that motion. You will have to go to that dash. Your left corner or right corner actually attempted that angle hold. But I would say for the cover defenders, they'll have to not look at the leader, but look at the defender and look at your colleague and do the dash. As once again, Jagbir has been sent back on the bench. This is Panchala Pride now maintaining that lead in a very, very good position. Oh, he's not hurt himself. I guess he's not hurt himself there. I'm sure he's all okay, but our physio partner UEM is here for any sort of very, very immediate medical attention that is required. University of Engineering and Management, Sachin Jagbir, who had done so very well, is just trying to limp across and making sure the foot is all right. And also our hospital partner is a very, very nice association that we've had, because all the kabaddi players are being kept in proper shape and proper injury-free sort of environment, because this is a tough game. And talking about hospital partners, the Metromas in association with Abhishek Gupta, a good association to have. और यहाँ पर डिफेंडर कर रहे हैं लगातार लेफ्ट कॉर्नर पर अब प्रॉपर कॉर्नर आशीष मौजूद है। इस बार बहुत ज्यादा टैकल करने का प्रयास किया कि सचिन ऑफ कोर्ट हुए हैं और अब वहां पर ऑफ कोर्ट होते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा संकेत अभी पॉइंट लेकर आ रहे हैं, पर ये संकेत नहीं था कि अगर सचिन इंजर्ड हुए हैं और खासकर ऐसे मुकाबले में आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द राउंड्स, बट सचिन जगबीर युवा कबड्डी सीरीज में थोड़ा सा अगर ग्रहण देखा है इंजरीज का, बड़े बड़े खिलाड़ियों को इंजरीज होता हुआ नजर आया है। कुछ सीरियस इंजरीज रही है, कुछ निगल्स रहे, और सचिन यही एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके सभी खिलाड़ी और भी फैंस और हम भी कि बिल्कुल पर क्रैम्प हो, निगल हो, बहुत जल्दी वो वापसी करे कोर्ट पर। अभी अगले 10 मिनट के लिए अगर वो न भी आए तो शायद तड़ोबा टाइगर्स को ज्यादा फर्क पड़ेगा, परंतु सिंधु सोनिक जरूर चाहेगा कि तड़ोबा टाइगर्स अब यहाँ से वापसी करे। 12 पॉइंट की जो लीड है पंचाला प्राइड के पास महज एक जन है। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं बूस्टर की तरफ, सर्वाइवल राउंड में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो उन्हें मुकाबला जीतना ही होगा। Yeah, they are on the verge of that. But yeah, just talking about Sachin Jagbir, as he was moving away, I felt he is not having a very big injury, because he was up on his feet. He was just having issues with planting the right feet across, and then this under the arms from was fantastic to watch. The right cover came across him and could not keep him down. That's a very, very good raid by Aman Gulia. और यादव थे वहां पर डिफेंडर जिनका वहां पर शिकार बनाया, और नीर मलिक सब्सिट्यूट होकर आए थे। इन्होंने और रेडर बहुत इंप्रेस किया था, बट बतौर डिफेंडर बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने पिछला डिफेंस जब वहां पर किया तो सक्सेसफुल डिफेंस इन्होंने किया था पंचाला प्राइड के लिए, यानी कि डिफेंडर के तौर पर अपनी टीम के लिए बहुत यहाँ पर कार्य करते हुए। और मोहित वो आज बतौर डिफेंडर टीम के कप्तान तड़ोबा टाइगर्स को ज्यादा पॉइंट, ये बोनस इन्हें जरूर मिले कुछ यहाँ लेकर आए रेड में, परंतु जिस प्रकार है, जिस प्रकार से वो डिफेंडर है और रेड पॉइंट लेकर आ रहे हैं। चलिए डिफेंस नहीं तो रेडिंग में ही सही, मोहित कि मेरा फॉर्म मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। Yeah, big running and that very, very surprising one. Once again, right cover not going back in for the Panchala Pride, and now it's a do-or-die raid. So 10 points ahead. Panchala Pride will go into that do-or-die raid and immediately get a point for that kick. Left corner not being very agile enough there, Ashish. पर अभी कौन मौजूद थे, क्या नितिन वहां पर, बट एक बार फिर से मैं पिछले रेड में बात कर रहा था, ओ सचिन वहां पर रवीन आते भी क्यों नहीं, क्योंकि आपने कह दिया था कि मुझे लग नहीं रहा इतनी सीरियस है, तो हमें आप पर पूरा विश्वास है रवीन, आपकी काबिलियत पर। आपने जिस देखा, और मैं तो नवीन अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे प्लान बी भी मेरा रेडी रखें, प्लीज आप एस्ट्रोलॉजी के लिए जरूर जाइएगा, भविष्य के ऊपर जरूर जाइएगा। और तो प्लीज देखिए, मैं भेजना चाहूंगा, मेरे हाथ की लकीर भेजना चाहूंगा नवीन, प्लीज। बाप रे बाप, नहीं, I'm a very, very difficult guy, as I always keep telling you. What is it is, I completely see, there's a, I guess each 1 point will come. Let's see what the referee says. They will just look at this.
as an official timeout. They will this. Yeah. That's what the referees say. They're just putting across that they'll have a discussion in the middle. I guess Sunuji has given her verdict, and that will be what it is. 2 points. Panchala Pride is that's coming in to the Raiders. Once again has got it with the and also touching the midline before going outside the lobby. That is nice. Yeah, so I was just talking about the way how Sachin Jagbir has come back. See, I'm a man who will just depend on how the planets revolve around the sun. I will not say whether how it's revolving in my life or in anybody's life, right? The planet's time and the place is to revolve around the sun, rotate amongst themselves, and then revolve around the sun. You will just believe in that because that is what it is. That is the fact. That is a real that is there, which is scientifically and all the astrophysicians agree to that. And that is how I saw Sachin and said, if you are able to plant your right foot down on the mat or on the field, that's not a big twist or a turn. If you are not able to do that, and that is somewhere you have to worry. But when Sachin walked, I just felt it is just a small cramp or a cramp that where he could not stretch his legs. So what our physiotherapist done is, I guess if I'm right, just because of the small technology that I know, he would have stretched out Sachin's right leg and immediately sent him on the to raid. And look at this! I really request all the defenders there to just be very careful with this, but he's coming and the defenders, yes, I cannot request them to be soft on the radar, but somewhere, yeah, just maintain that no twist happen. That is very, very important. And this is a big request to all the defenders and also on the raiding skills. Anything is fine. Pulling, pushing, and stretching yourself is fine. But where the injury occurs is when the twist happens, that's it. And the ankle is being twisted or knee is being twisted. That is what the does not like. Because that is against gravity or against the body's. बिल्कुल नवीन और अंत की थोड़ी बातें समझ में आई है शुरुआत की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा परंतु ऐसा लगा बाउंसर की तरह निकल गई ऊपर अरे जोक नवीन जिस प्रकार से मुझे थोड़ी सी याद आ गई थी जैसे युवा खिलाड़ियों की तो मैंने सोचा चलिए बाउंसर का उपयोग किया जाए बट इन्होंने करमवीर कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं था जरूर रेड पर पंचाला प्राइड का मुकाबला देख रहे हैं जाइए आप क्रिकेट को और पूरे से कबड्डी पर स्टिक कीजिए एक बार से कौन थे वहां पर क्या देवेंद्र फॉर्म में नजर आते हुए और थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बात कर रहे थे मनीष गुड़िया की और साथ नीर मलिक ने भी 10 पॉइंट प्राप्त किए ये शायद डू और डाई रेड है ये शायद डू और डाई रेड और डू और डाई रेड में बड़ी आसानी के साथ एक बार फिर से शिकार बनाएंगे टीम के खिलाड़ी को और नवीन में बात कर रहे हैं वहां पर नीर मलिक की देखिए 6 टैकल 4 रेड पॉइंट्स पॉइंट है देखिए कितनी आसानी से और ऐसा लगने ही नहीं दिया कि वो डोमिनेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मनीष गुड़िया डोमिनेट कर रहे हैं पर बहुत अच्छे अंदाज प्रदर्शन करते हैं और देखिए 7 रेड टैकल पॉइंट्स ले लिए हैं very much a high five for him and also Super 10 which will be very close for Neer Malik. He will be once again as a big raider and a very good all-rounder for his team. Yeah, he's raiding in now with super tackle situation which is on. He will look at this as an opportunity to clean up the Taroba. Will he go for the kill? Once no, he was just having some thoughts and he will go back, I think, empty-handed. की आवश्यकता युवा खिलाड़ी और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट और लीजिए आप लगातार मलिक आप भूल जाइए खिलाड़ियों को सिर्फ ध्यान आकर्षित कर नीर मलिक की तरफ और देखिए कितना खुश होते हुए यहाँ पर उनके फैंस कितने खुश होते हुए एक बार फिर से की बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है वहां पर राइट इन पर खेलते हैं बट उसके बावजूद 8 टैकल पॉइंट लेना राजेंद्र बाकर जहां पर शायद उन्हें 10 पॉइंट्स लेते नवीन मैं जहां तक मुझे याद है एक और बार ऑल आउट हो जाएगा खीमा Taroba Tigers are making sure the Simpsonics really feel very good with this performance as Panchala Pride have that timeout. Sombir ji will be really happy of the lads in grey and look at that, it's a very discussion as Anil Kumar probably gives it for the Taroba Tigers and says okay abhi 3 minutes बचा है कुछ तो करो 18 की लीड है कुछ तो करो 1 तो पॉइंट यहाँ से लेकिन यहाँ पे Sombir ji will be saying that okay you've got
under our belt, boys. Don't throw it away. क्यों करना है? If I'm able to the body language, क्यों वो सब करना चाहिए? Just keep it under your control. But all Neer Malik, Harshit, definitely can tackle points, and then ensure you also support Manish Gulia is a big way coming in. So are you feeling harsh for Sonics और हिमांशु? बहुत बड़े क्रम में उनके पास पर मौजूद है। हालांकि देखिए मुश्किल, और देखिए आप यही चाहते हैं, आप किसी भी खेल किसी और टीम पे डिपेंडेंट ना हो, पर अभी शायद वहां पर प्रयास करते हुए नजर जरूर टडोबा टाइगर्स। 3 मिनट का समय है, पर पंचाला प्राइड और पूरी टीम खुश होगी, उनके फैन खुश होंगे। जिस प्रकार से आप उनसे आज खेलना चाहते थे, वो डर खेलें। उन्होंने एक बार भी वो डू और डाई में नेगेटिव अप्रोच के लिए हमेशा पॉजिटिव इंटेंट से खेले, और शुरुआत उन्होंने पहली ही रेड में पॉइंट लिया था। विपक्षी डिफेंस से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और मनीष गुलिया जानते हैं, बेहतर जानते हैं प्रकार से आपको समय व्यतीत करना है, और एक बड़ी पॉइंट यहाँ पर लीड कर लिए। तो क्या महज औपचारिकता है बची? प्रयास जरूर करेंगे टडोबा टाइगर्स, पर क्या महज औपचारिकता है इस मुकाबले में नवीन? Yeah, absolutely. They will try with Sachin Jaiswal going in. But yesterday, Harshit, you just asked me about Himanshu Narwal, if I'm feeling bad for him. Yes, personally, I will really feel bad for a raider who scored more than 110 raid points in the series, not being going through towards the bush from the Simpsonics. Yes, I am really disappointed there. But let me remind you about a match which happened yesterday. I guess it was between Mustal and the Marvels, somewhere there, if I'm not wrong. What happened in that match, and why am I talking about yesterday's match? Because in that match, nobody scored a high five, nobody scored a 10. Everybody contributed. You know, there were 2 defenders who got in 8 points, 9 points. There were 2 defenders who got in 4 tackle points. There was an all-rounder who's gotten 5 raid points and 3 points. So why I was more happy with that is because yes, this sometimes high fives on the personal stone. Yeah, we all agree that. But somewhere, Super D is a team game where everybody needs to participate. Super 10 high fives, yes, that is there for the record. It's there for the enjoyment. If your team wins, yes, brilliantly done. But if your team does not win, all your super, all your high fives is of no use. I'm being very honest in this. When the team is there in the front, everything goes behind. This is what I really loved about yesterday's, where there was no high fives, no super 10, and that team won. ग्रेट, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि लगातार पॉइंट्स मिल रहे हैं, अभी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। 11 नंबर इस बार शिकार बनाएंगे राइट कॉर्नर से, और क्या खूब बात कही है ना आपने। देखिए कभी भी एक चना भार नहीं फोड़ सकता है जिस प्रकार से, और हिंदी कहावतें जो हैं वो अक्सर हमेशा बहुत सिद्ध और बहुत ही महापुरुषों लिखी गई है, और एक चना भार नहीं फोड़ सकता। और बिल्कुल सही कहा आपने, एक खिलाड़ी कभी भी आपको कुछ मुकाबले जिता सकता है, बट अगर आपको सर्वाइव करना है, सर्वाइवल राउंड जैसे और युवा कबड्डी जैसे कॉम्पिटिटिव और क्वालिटी कबड्डी गेम में, तो आपको आने वाले समय में सबको एक साथ लेकर प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक है। कभी होता है, बट अगर आप सारे मुकाबलों में देखें, कुछ इंजरीज का भी इशू वहां पर हुआ कुछ खिलाड़ियों को, बट सिंधु सोनी हम चाहेंगे कि अगली दफा आप बेहतर होकर आए और अच्छा खेलें, और हो सकता है कि आप वहां पर सिर्फ नहीं करें, आगे वाले आने वाले उसमें भी जाएं। Absolutely, and I will also try and say this as once again there is a double ankle hold coming in, and Pride are now going ahead with this and saying, okay, thank you so much for all the management, for all the people who are very supportive you to come into this level. We will not let them go just like that. I always keep saying this, even for the Marvel, even for the Mavericks that I was just telling them. In what I read, I think Manish Gulia will not try too much now, because this is the last raid of the match, and he will win, and I guess somewhere take the bonus and just make sure that he does not even give one more point away, but he doesn't even go in, because as the bonus is off, no bonus as well. So he goes back, Raider is out, no problem, but 35 for Tadoba Tigers, and then there you go. That's a confirmation. Simpsonics will go back. We will not let them go just like that. We will just get them into that prominent conference zone, that they will come back very strong in the next season, because the Yuva Kabaddi series is here to stay, and this is just the summer edition. We do the winter, the spring, and all the other editions that is coming. So 51 for Panchala. They go through comfortably to the booster round, which is going to happen from Wednesday after a break. So Monday and Tuesday we just take back all important, all required
for everybody, for the players, for people who are involved behind the camera, with the cameras. Everybody is requesting that 2-day break. But this is going to be a big win here for Panchala Pride, Harshit. बहुत बड़ी जीत और एक बहुत बड़ी जीत की अगर बात करें तो क्यों ये जीत ये दिखा देते हैं आपको। और प्रोडक्शन टीम की जितनी तारीफ की जाए, हमेशा वहां पर स्क्रीन के सामने बैठे हैं हमारी प्रोडक्शन टीम हो या युवा कबड्डी सीरीज के सभी खिलाड़ी, हमारे सभी ऑफिशियल्स हो, मेंबर्स हो और युवा कबड्डी की मैनेजमेंट टीम, चाहे हम हमसे कोऑर्डिनेट करने चाहे मशवरे की बात वेरी फास्ट इन इज टाइपिंग, जिस तरह से वो स्टोरीज देते हैं, संग्राम, अभिषेक एंड ऑल द पर्सन से लेकर सभी की बात करें, हमारे कैमरामैन, हमारी प्रोडक्शन टीम को सर्व करते हैं वो यहाँ पर 2 दिन की हॉलीडेज, जिसमें वो फोन और स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आने वाले, उनके फोन एक लॉकर दिए जाएंगे और वो करने वाले जयपुर में। Absolutely, and I've also been told that I've got a mail confirmation also with all this 2-day break, and for all the people that you just mentioned, everything right from food to movie ticket and everything managed by one person called Harshit. Oh, that's great, that's great. मैं तो अभी से तैयारी कर Right. I was expecting that answer from you, but let me tell you one thing. In the game of kabaddi, just coming back to some serious talks, I will always tell this to anybody who's watching and also playing. See, what happens is a single man will only win you war. That's all. But a battalion will win you battles. So here you are there to win battles. Something like going survival round to the booster round, a big battle won by Panchala. And what it also shows is there's as you said, the strength lies in the unity. So one single brigadier can not win you a battle. It has to be a battalion that is get you the battle. So that is what for kabaddi, as we see Taro Tigers with 35 points going on, but they will be making sure that the booster round is a different story for them. And I'm happy that Sachin came back with that small niggle to the mat very, very quickly. But Panchala Pride will take a lot of confidence from this and go through. वेरी क्लियरली नवीन और 51-35 से यहाँ पर मुकाबला जीत लिया है और जल्दी मिलेंगे अगले मुकाबले के दौरान। पर उससे पहले टैकल पॉइंट्स लेते पंचाला प्राइड ने यहाँ पर और द पॉइंट्स टेबल मैं चाहूंगा नवीन आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करें हम सभी को। Yeah, very much because see, Magnets and Kaziraga Rhinos, Periyar Panthers, everybody getting qualified. Also the Hampi Heroes go, and now this is all down to one team, which we're trying to see if since somewhere I guess they would have said, okay, we are done with this and we will be packing our bags. But there is one more for the Vijayanagar Veers to come up against the Aravali Arrows. I will just say that's going to be a match where the Vijayanagar Veers also be saying goodbye for us in their last match. But the next is going to be very, very important for the Aravali Arrows for making sure that they go in and get some confidence out of that. That's all. Because they are experimenting a lot, and I really want Jai Bhagwan to again go ahead and fire and make sure something happens. I really want to see somewhere the combination of Govind Gurjar and Kapil Gurjar to good effect, and Govind Solanki, who has been very silent in the 2 matches, coming in and making sure good match practice is important. The Vijayanagar Veers will try to stop at 8 p.m. So we've got first 8 teams, and I guess it is the Mughal Mavericks and Sin Sonics and Vijayanagar Veers. All three teams will be saying adieu to us, and we'll be saying goodbye with a very, very heavy for those 3 teams, because all of them, everybody, the Mavericks, the Sonics, and the think tank behind them, the people behind them, for all the players to come in here and make sure to put up a very, very good game of kabaddi. Thank you so much for coming in here. But we will want that promise from you that you will come back next season more stronger and with more Josh, more and Junoon. So, said that, see you soon at 8 p.m. on Fan Code. I am Naveen, along with me was Harshit. Thank you so much, everybody.